Good evening, everyone. Thank you so much for joining us in today's episode. I welcome you all to another episode of Boost Your Board Prep Aakash Live Webinar Series. I'm your host, Suruchi, Academic Head English at AESL. And today we have gathered here to discuss last 30 days preparation strategy to boost your Class 10 board preparation. Now, I know you guys have been overwhelmed with all the questions that are coming to your mind, that now we have just 4 weeks left, what to do from here. To put all those queries to rest, let's understand what exactly should be the preparation methodology from today onwards. Now, first of all, I would like to thank you for giving such a phenomenal response to our previous webinar. To watch the previous episode, in case you missed that, you can visit the link given in the description box. Also, if you really don't want to miss any of the regular updates, you know the drill, hit the bell icon and you will be notified. Now, please remember, acing your board preparation is just the stepping stone to your success, right? It's just like the first part of that ladder. I know you want to dig deeper further to understand what are those key things to keep in mind for each subject individually, right? So without any further delay, let's welcome our panelists together to understand three major things. What exactly is on agenda today? We will learn from our experts subject-wise tips for science, maths, English and social science, how to write subjective answers, how to even analyze sample paper along with the marking scheme. And before you forget, the most important bit, how to solve individual mock papers for most effective board preparation. Now, if you feel that we are not going to help you out to understand all of this, let me tell you right at the beginning that we will also guide you regarding the entire sample paper solving pattern. So do not go anywhere. Let's welcome our guests one by one. Our first guest today is Mr. Shukla, Assistant Director at AESL, and now as a veteran in the industry, also as an expert in the discipline of physics. His innovative teaching methods and digital learning solutions in form of activity-based learning have been beneficial to a lot of students. So I extend my warm welcome to Atul sir. Thank you, sir, for joining today's discussion. Thank you so much, Suruchi ma'am. I'm so glad for being invited in this webinar to guide the students about the preparation strategy in the last 30 days of their class 10 board exam. I remember my teachers used to say that if you fail to plan, you are planning to fail. That means proper planning and strategy will definitely give you sure success. And this webinar series of Boost Your Board Prep will definitely help a lot of students to plan and score much better in their board exam. And I'm extremely happy to help our student in their board exam. So once again, thank you, ma'am. Over to you. Thank you so much, sir. Let's welcome our second guest today, one of our panelists who's also known as a veteran chemistry faculty. Our second guest is Mr. Kaushik Sharma, Assistant Director Foundations. Now, with his expertise in chemistry and the mentorship he's provided at Aakash Foundation Southex, his guidance has played a pivotal role in shaping success stories of many students of Aakash. So thank you so much, Kaushik sir, for joining today's discussion. Kaushik sir, you are on mute. Thank you, Suruchi ma'am, for having me for this webinar. And I hope and believe that this webinar series is definitely going to make a very positive impact on their board preparation and at least getting the desired results. So thank you for having me once again. Absolutely, sir. Now, let's call our third guest today. Our third guest is Mr. Roshan Singh, Assistant Director Foundation, UP West and Uttarakhand. Now, as a mentor for over a decade, his expertise in the subject of mathematics has been really helpful to a lot of aspirants who not only dream of acing school exams, but also their Olympiad preparation. So welcome, Roshan, sir, and thank you for taking out time to do this today. Thank you so much, ma'am. And I'm very excited about telling the student the board strategy for the last 30 days. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे यहाँ पे सेशन के थ्रू बहुत कुछ मैक्सिमम बेनिफिट हमसे ले सकते हैं
और they can be benefited maximum. तो ठीक है मैम, अच्छे से हम लोग इसको बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे और काफी अच्छा कोशिश करेंगे कि बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हो. ओवर टू यू मैम. Absolutely, sir. I know all my listeners are waiting कि बस बता दो what exactly has to be done in science, maths, etc. So without any delay, let's commence today's discussion by getting to know the paper pattern and types of questions, right? So I know a lot of you have seen the sample papers, but are still not sure in terms of what exactly is the division of questions, section, etc. So I want all of you to make a note of at least the first two things, and this is where I would want you guys to pay attention to the first segment, and that is the division of science and mathematics section. So you guys can see it on your screen already, the division of 3 sections, the total number of questions. So Kaushik sir, this is where I would like you to commence today's discussion by talking about what exactly is the rationalized paper pattern for science. Right, ma'am. I think before telling them or explaining this, pattern of test paper and the type of questions which are going to come in their board examination, I think the most important thing is that first they need to understand the rationalized syllabus. Okay, which is if they would, keep on putting in their hard efforts in covering the entire syllabus, which is not going to help them to get the best result. So one thing which is really, really important for all the students is to understand the rationalized syllabus first. Like in chemistry, if I'll tell you that there are 2 chapters, carbon and its compounds. So all the topics after homologous series are being deleted. But that doesn't mean they should not at least go through once. I still recommend, because in the sample paper of CBSE, there are few questions which can be solved only if the students have gone through at least once the physical and chemical properties of the important organic compounds, that is ethanol and acetic acid. So please go through once at least that rationalized syllabus also, but don't put more emphasis on that, right? Then your second chapter is as it is, periodic classification of elements. There is no deleted topic. When it comes about biology, in biology, the first chapter is heredity and evolution. Evolution portion is completely deleted. So there is no point, putting in your energy in the preparation of that topic. Then yours, how do organisms reproduce, is a complete chapter. Our environment is a complete chapter. In physics, electricity is there. And the another chapter, magnetism, which is normally the magnetic effect of electric current. Normally, that is the title of the chapter. So first, you need to understand the rationalized syllabus. Then you can move to understand the pattern of examination or test paper. So in totality, there are 15 questions. The test paper is being divided into 3 sections, A, B, and C. In section A, there are 7 questions. Each question is having a weightage of 2 marks. Then section B is there, which is having 6 questions. The weightage of each question is of 3 marks. And the important and the very significant feature of the test pattern is the case study based questions. Right. So if I would, consider the 3 subjects, physics, chemistry, biology, in terms of the weightage of marks. So the weightage of marks in term 2 is altogether different from the term 1. In physics, the weightage is of 18 marks. In chemistry, the weightage is of 10 marks, whereas biology is given the weightage of 18 marks because it is consisting 3 chapters, right? So this is something which they need to understand. And normally, then the next question which come to the mind of the students is to which topics carry higher weightage. I was just coming to that. I know a lot of my students have just pitched in the same question. Which topics carry higher weightage? So Kaushik sir, if you could just also point that out. यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ बच्चों से कि यार सिलेबस ऑलरेडी रैशनलाइज्ड है, उसमें भी आपको टॉपिक का वेटेज चाहिए कि कौन से टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज है, सारा कर लो. The second point which you need to keep in your mind is that there are internal choices.
in few questions, so that those internal choices are actually, covering the entire syllabus. Even then, we would definitely want to tell them that these topics are having, you know, the weightage in terms of the frequency of the question which is being asked in the sample paper or in the pre-term 2 examination which are being conducted in different schools. So that is something which can be taken care of. So I would still recommend, please do not focus or invest your energy into getting to know that this topic is having, highest weightage. So I'm just supposed to, prepare this particular topic only because the questions are supposed to come from that topic itself, right? ऑलरेडी So कौशिक सर देखा जाए तो टॉपिक्स कम हो गए हैं जैसा कि आपने बोला। बहुत कम, और yeah, मतलब ये अभी स्टूडेंट्स को ये भी देखना होगा कि प्लान वो इस तरह से बनाए अपना कि ऐसा ना हो कहीं कि डिलीटेड टॉपिक्स को ही वो पढ़ रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं। और exactly. कभी-कभी इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमको एक कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। एक्चुअली डिलीटेड पोर्शन में वो टॉपिक लिखा नहीं है और हमको एक कन्फ्यूज़न हो गया कि हो सकता है कि ये टॉपिक भी डिलीट हो गया क्योंकि जो पोर्शन सिलेबस दिया है उसमें भी वो टॉपिक नहीं है और डिलीटेड पोर्शन में भी वो टॉपिक नहीं है। तो हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है हम कम से कम सिलेबस चाहते हैं, बच्चे जैसा सोचते हैं। तो क्या होता है अक्सर कि कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो हम स्किप कर जाते हैं ये सोच के कि ये हो सकता है डिलीट हो गया हो। तो यहाँ पर मैं मतलब अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने टीचर्स से ये जरूर इंश्योर कर लीजिए कि वो पर्टिकुलर टॉपिक और स्पेशली जो उसके सब टॉपिक है वो सिलेबस में हैं या डिलीट हो गए हैं। आपके टीचर्स बेहतर गाइड कर सकते हैं, वो अगर बताते हैं आपको डिलीट हो गए हैं तो फिर कोई भी मतलब उन टॉपिक्स को अपना टाइम देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस समय जो आपके लास्ट 30 डेज है। और देखा जाए तो सिलेबस काफी कम है तो 30 डेज में अगर आप सभी लोग सही स्ट्रैटेजी और प्लान करते हैं जो कि इस वेबिनार में भी 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज आपको बताया जाएगा तो डेफिनेटली आराम से आपको सिलेबस कवर कर सकते हैं, अपना पूरा तैयारी कर सकते हैं। इवन अगर आपने अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई भी तैयारी नहीं है तो नहीं अभी है, सफिशिएंट टाइम है, आप बिल्कुल सारी चीजें नए सिरे से और अच्छे से तरीके से तैयार कर सकते हैं। बस सही प्लान बनना जरूरी है, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना जरूरी है सर। right, Also, sir? Atul sir, you mentioned how the types of questions are broadly into two kinds. You have case study based questions, which are more application oriented, and you also have short answer type questions. So, Atul sir, if you could just point out physics mein, if a student wants to identify which are the important topics in which case study questions must be practiced, if you could just point that out for our listeners so that उनका भी एक checklist बन जाएगा कि in 30 days में ये topics तो नहीं miss करने। मैम अगर फिजिक्स की बात करें तो जो ऑप्टिक्स का पार्ट है लेंस एंड मिरर फार्मूलाज पे बेस्ड वो काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनसे न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं, केस स्टडीज पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे जाके क्लास 12th में भी जो है वो फॉरवर्ड होते हैं और इन्हीं की डिटेल बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं। तो मतलब ये काफी कोर्स टॉपिक है, काफी बेसिक कह सकते हैं कि टॉपिक्स हैं जिनको कि बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये सारी चीजें हमने क्लास 12th में और अगर आप कंपटीशन आगे जाते हैं जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर भी ये सारे टॉपिक्स का बेसिक्स तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो उस केस में अगर मैं बोलूंगा तो मैग्नेटिज्म के जो मैग्नेट्स का है, सोलेनॉइड्स है, बार मैग्नेट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। लेंसेज का जो टॉपिक है, लेंस है, मिरर फार्मूला पे बेस्ड जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनको किसी भी हालत में जो है वो नहीं छोड़ना है। तो ये चीजें हैं जिनको बच्चे ध्यान रखें अपनी जब भी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा ये भी देखना होगा उनको कि कौन से ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर हमने इधर पे स्किप किया तो चलिए ठीक है, हो सकता है कि हमारा काम चल गया लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म हुआ। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका खाली ये नहीं कि क्लास 10th के बाद वो खत्म, मतलब आपको आगे जरूरत नहीं आएगा। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जब तक आगे आप अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं और पढ़ते हैं तो ये हर जगह, मतलब अगर ग्रेजुएशन मास्टर्स में भी जाते हैं तो भी इन्हीं टॉपिक्स पे चैप्टर्स बनते हैं और उन्हीं को स्टडी करना होता है। तो ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हर जो भी साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल। Kaushik sir, what about chemistry and biology? Are there any case study See, specific topics? yeah, chemistry, which is the weightage is of only 10 marks.
And the chances are very bleak that we are going to have a case study based question from chemistry. Even in the sample paper or the test papers which are being conducted in schools, there were hardly any question paper where the case study based questions was from the chemistry as a subject. So the chances are very bright that we are going to have the case study based questions from physics and biology. In Biology, correct. biology, yeah. So in biology, this cross, monohybrid cross, dihybrid cross is really important topic, because evolution is being completely related. So heredity in itself is having a weightage of 9 marks. If I'll, micro at a level, if I will analyze the sample paper of CBSE, then there is a division of 18 marks. Like heredity is being given 9 marks, reproduction is being given 4 marks, and our environment is given 5 marks. But because the content and the vastness of how do organisms reproduce is little big as compared to heredity and our environment, so at times I have seen in some papers of different schools that though its weightage is of 4 marks, but they have given questions up to 6 or 7 marks. But CBSE sample paper has followed this weightage very strictly, and I hope their final paper is from the CBSE itself. So they just need to focus on that thing only. Heredity 9 marks ka hai, reproduction 4 marks ka hai, and our environment is 5 marks. एक और नया feature जो मैंने देखा है personally, for the first time I have seen this numerical based on these cross, dihybrid cross or monohybrid cross in biology. So they have introduced this thing for the first time. For example, the monohybrid cross is there, and F1 generation में जो है वो 100 plants are there. So phenotypic ratio के हिसाब से what would be the number of plants which are tall? So though थोड़ा सा strange लग रहा है कि biology में numerical, have you gone, but this is the सर fact. लॉजिकल देखने में आ रहा है कि पेपर का जो पैटर्न है वो Concept based लॉजिकली application, right? कंसेप्ट बेस्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है. Application based, yeah. जो Suruchi ma'am mentioned one point that case study based questions are more have given more emphasis on application based questions. So please do not forget to practice this sort of questions. Ozone depletion is one of the important topic which is always being asked. So these are certain topics जहाँ पे आप थोड़ा frequently revise कर सकते हो. I think this micro level analysis is more than enough as of now. Thank you so much for laying down all the intricacies, sir. I know all our students who are worried about science, especially in terms of weightage analysis. I don't think you guys should worry any further. Make a list of all the pointers that have been highlighted and now start identifying methods of learning these topics at a micro level, the way sir pointed out. So let's jump into the discussion for maths also. Roshan sir, let me just quickly bring down our students' attention towards the maths paper pattern also. We can already see on screen that the question paper is divided into 3 segments. If you could just point out for our listeners the most important chapters and topics also in case of maths. Yes, ma'am. थैंक यू मैम. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वेटेज क्या है, कितने सेक्शंस हैं हम लोगों के. तो आप देखते हैं टोटल मैथ्स में 5 सेक्शंस हैं. पेपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं वेटेज की पहले बात कर रहा हूं, जिसमें टोटल 5 सेक्शन है, जिसमें नंबर 1 इज अलजेब्रा. अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये दोनों ही चैप्टर्स का 10 मार्क्स का वेटेज है. अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में ओनली 2 चैप्टर्स आर कमिंग, वन इज सर्कल एंड अनदर वन इज कंस्ट्रक्शन, और 9 मार्क्स का इसका वेटेज है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज trigonometry, some application of trigonometry is coming and it is weightage of 7 marks. Now moving toward mensuration, surface area and volume is coming, whose weightage is only 6 marks. Now in last, statistics and probability, but this time only statistics is coming of 8 marks.
तो ये तो मैम चैप्टर के नेम हो गए और इस तरह मार्क्स का डिवीजन है। अब सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, तो इसमें सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच इज कमिंग, और इस 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी अवेलेबल है। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन और 3 मार्क्स हैं, और इसमें ओनली 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस अवेलेबल है। और सेक्शन सी जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, और 2 क्वेश्चन केस स्टडी पर आएंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 मार्क्स का, और इसमें 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी अवेलेबल है। अब इनकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये तो हम लोग ने देख लिया पेपर पैटर्न जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसके अकॉर्डिंग हम सभी बच्चे जो भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। अब रेशनलाइज सिलेबस की अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फोकस करना है जैसे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, नेचर ऑफ रूट्स पे, मतलब ये ऐसे टॉपिक है यू विल गेट शॉर्ट 1 क्वेश्चन ऑन इट। नेचर ऑफ रूट्स पे आप डिफरेंट पेपर्स देख लीजिए, 1 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एंड वर्ड प्रॉब्लम भी आपको करने हैं, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम भी एज अ केस स्टडी के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाया जा सकता है। तो क्वाड्रेटिक में ओनली यू हैव टू फोकस ऑन ओनली दीज 3 टॉपिक्स ओनली, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स एंड वर्ड प्रॉब्लम। Now moving towards the next chapter, that is arithmetic progression. Simple, only 3 things we have to follow. General term, problem based on general term, problem based on sum up to n term, and last situation based problems. तो एपी में सिर्फ हमें फोकस इन्हीं 3 टॉपिक पे करना है, nth टर्म के ऊपर, सम अप टू n टर्म के ऊपर, एंड लास्ट वी हैव टू फोकस ऑन वर्ड सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, क्योंकि केस स्टडी यहाँ पे भी प्रोबेबल चांस है कि हमें केस स्टडी के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं ओनली इस बार, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो सर्कल्स में थ्योरम तो 2 ही आ रहे हैं। एक जो थ्योरम है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ये थ्योरम आ रहा है। और सेकंड थ्योरम जो आ रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओनली दीज 2 थ्योरम्स वी हैव टू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। कोई भी न लेफ्ट में जाना न राइट में जाना, ओनली वी हैव टू गो स्ट्रेट ओनली, और स्ट्रेट इन्हीं दोनों थ्योरम पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। समटाइम स्टूडेंट सेज सर पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर, क्या ये भी आएगा? नो, स्ट्रेट अवे नो। जो रैशनलाइज सिलेबस है वी हैव टू फोकस ओनली ऑन दीज 2 टॉपिक्स ओनली, नथिंग एल्स। कहीं हमें डिविएट होना ही नहीं है। अब जैसे हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में केवल 2 ही कंस्ट्रक्शन हमें देखने हैं। पहला जो डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। और सेकंड जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की और जरूरत नहीं है, बस जैसा पहले भी कहा स्ट्रेट चलना है, इन्हीं दोनों पे प्रैक्टिस करनी है। डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्लियरली कह दिया गया कि प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, बहुत ज्यादा हाईली लेवल के प्रॉब्लम नहीं कंस्ट्रक्टेड होंगे। केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पर बेस्ड प्रॉब्लम सीबीएसई ने रिलीज किया है, इन्हीं पे प्रॉब्लम आएंगे। समटाइम स्टूडेंट ब्रिंग क्वेश्चन फॉर 15 डिग्री, 75 डिग्री, हमें करना ही नहीं है उस पे क्वेश्चन, हमें सिर्फ 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इन्हीं तीनों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। और नेक्स्ट है सरफेस मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर इज कमिंग फ्रॉम मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपको फ्रस्टम करना ही नहीं है। मैक्सिमम टाइम हमने क्या देखा है, स्टूडेंट फ्रस्टम के प्रॉब्लम लेके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप एक क्वेश्चन भी फ्रस्टम के नहीं प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है क्यूब्स पे, क्यूबॉइड पे, स्फीयर पे, हेमिस्फीयर पे, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन ओनली। और हाँ, इनके कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे भी क्वेश्चन आएगा, मतलब दो फिगर को, ज्योमेट्रिकल फिगर को कंबाइन करके क्वेश्चन आएगा। इवन मेल्टिंग के कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आएगा, एक बिग सॉलिड को मेल्ट करके स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे यूनिफॉर्म सॉलिड्स में हम लोग बना रहे हैं, तो उस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर में ओनली स्टैटिस्टिक्स इज कमिंग, और स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, और
सीबीएसई ने तो स्पेसिफाइड कर दिया कि अज्यूम मीन मेथड तक ही रहिएगा, अज्यूम मीन मेथड के ऊपर आपको जाना भी नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड ये सब नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ अज्यूम मीन मेथड तक ही प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो हो गया हमारा रेशनलाइज सिलेबस। अब एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों में आता है कि जो 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किन चैप्टर से आ सकते हैं। तो देखिए वैसे तो आप लाइव एग्जांपल सरफेस एरिया वॉल्यूम में और सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे लाइव एग्जांपल मिलते हैं, लेकिन चैप्टर सभी में। अब जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी डिस्कशन होता है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केस स्टडी कैसे बन सकता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केस स्टडी, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक केस स्टडी बन सकता है, फैक्टराइजेशन पे बन सकता है और नेचर ऑफ रूट्स पे भी बन सकता है। तो और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, पर हमें हर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। अभी भी हमारे पास 30 डेज है जिसपे हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम एपी पे बात करें तो एपी पे डिस्कशन ऑन एपी, नंबर कार्ड गेम, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, इन पे भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। सर्कल्स की बात करें तो टेंजेंट और थ्योरम ऑन सर्कल पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बात किया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे फ्लाइंग एरोप्लेन, विजिट टू अ टेम्पल, और अगर हम देखें कि बॉय स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और मूविंग कार प्रॉब्लम्स, और हम लाइट हाउस के भी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री पे बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इसकी वेटेज भी आप देख रहे हैं 7 मार्क्स का है, और यहाँ से केस स्टडी आने के चांसेस हाईली है। मतलब अगर मैं कहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस स्टडी कमिंग फ्रॉम विच चैप्टर्स, तो उसमें स्ट्रेट अवे 2 ही जवाब होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये इन पोर्शंस में मैं बच्चों को प्रिपेयर करने को कहूंगा, और आप पेपर्स को जरूर देखिए, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक अब जिन स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन में पूछा है what should be part of our timetable when it comes to these 30 days, I think sir has already laid it very nicely for your entire maths preparation. Now if you still feel that something is not clear, this is where you need to go back to your teachers for doubt clearance and clarify those things individually. Thank you so much sir for laying that down so beautifully, especially in case of maths. Now we are not going to leave behind English or social science also. So Atul sir, I'm going to bring you back to the discussion. I'm going to share the paper pattern on screen, which is already quite understandable to all of our students. And at the same time, if you could just point out what exactly they have to keep in mind, especially the major pointers for social science preparation, right? Because when it comes to identifying key areas of social science preparation, most of the students aren't really sure कि fact based, opinion based कैसे questions को divide करना है. So if you could just point out based on the paper pattern, what are the key things they have to keep in mind for social science? Right, ma'am. So if we talk about social science, there are 4 subjects: history, geography, political science, and economics, which we have been divided equally in 40 marks paper into 5 sections, that is A, B, C, D, and E. So section A contains total 5 very short answer type questions, each of 2 marks, and section B contains 3 short answer type questions of 3 marks each. Now, if we talk about section C, it has 2 long answer type question of 5 marks each. Also, students, this year 2 case study based questions have been added, where 1 case study based question is of 4 marks, which has been further divided into 3 subparts. Now, coming to section E, which has 3 map based questions of total 3 marks. So students, the map questions can be asked from the history topics, or mostly it comes from the geography chapters, such as the name of the wildlife, or name of the river, or location of an important one. So that's all for exam pattern of social science paper. Now, as I told you that social science is divided into 4 parts: history, geography, economical, and political science. And each part contains 6 to 7 chapters
That's why students find it difficult to cover the entire syllabus if they decided to study at the last minute, right? So since social science is a theory-based subject, so it is important to understand the topic and concept from the core. And right now, as we all said that syllabus is reduced, that's mean you have to cover all the topics. Okay, now there is equally weighted of all the topics. So you please make sure that you have to cover all the topics. And if you want to score good marks in your class 10th social science board exam, then I will give you some of the tricks to score good marks. Go through the heading of the answers because it is very difficult to memorize the entire answer, right? So to ease the pressure, always try to remember the headings. Make a timetable according to the topic. If you are good at geography, then try to give more time to history or economics or vice versa. And one last suggestion for you that do not start with a new chapter on the day of the exam, right? Try to avoid this because this will lead to confusion, thus poor performance in your examination. So you have sufficient time, plenty of time, these 30 days. Make a plan. Okay, identify the weak areas, identify the weak chapters, and first try to prepare those chapters. तो अभी आपके पास है sufficient time, easily cover up किया जा सकता है. जो भी 6 to 7 chapters हैं आपके पास, उसमें से एक list down कर लीजिए और accordingly जो है उन chapters को जो weak हैं उनसे आप start कीजिए और उन chapters को cover कर लीजिए. बाकी लास्ट के जो 15 days 10 days होंगे उनमें बाकी के जो चैप्टर्स हैं टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हुए उनको अच्छे से प्रॉपर से रिवाइज कर सकते हैं. Absolutely, sir. It's very important for you to gather your crisp notes, especially what sir was highlighting. So please do not sit with NCRTs for laborious reading. Make sure you have pointers already set. Make sure you have those crisp, detailed bullet points, and that is what is going to help you for your social science recalling practice, right? Now, coming to the English section, I think it's pretty clear. As you can already see, there are in total, 7 broad sections in terms of questions, but if I only talk about the most important areas here, you're going to have 2 passages, each carrying 5 questions, so total 10 marks there. Then in the writing section, there's just a single question, which means with an internal choice, you can either write a letter or an analytical paragraph carrying 5 marks, and followed by a grammar section, again quite brief, only 2 questions. One would be either editing, omission, or gap filling, followed by a sentence transformation question. So total 5 marks there. Now I know आपका core section literature है because that is what you prepare the most throughout the year. So please remember 2 kinds of questions: short answer carrying 2 marks and long answer carrying 5 marks. And how many long answer questions do we have to prepare? Only 2. So please remember, if this paper pattern is clearly laid down, the focus has to be on identifying strong areas first, right? Because you will not begin your paper from a section where you have to read a lot, waste a lot of time. No. Focus on the section you are very clear with. So let's say if you want to begin your paper, begin with literature question, क्योंकि आप पढ़कर गए हो, fully prepared है. How to prepare for literature is something which your teachers have pretty much guided you well for, because value point based system होता है. Points आपके आंसर में पूरे हैं, then the teachers are looking at accuracy, the teachers are looking at expression of writing. So these are the key areas which you must remember for your literature preparation. Overall, writing section only carries 1 question, so there is not much of a time management issue. Practicing in form of writing is what is the most important bit. So that brings me to the second part of our discussion today. अब जो इतना सारा हमने identify कर लिया subject specific ideas, now let's jump to the most important requirement. I know a lot of my students have asked me today, what are the most important revision tools that one can use individually for each subject? So let's understand, and Kaushik sir, this is where I would like to bring you into the discussion once again. How should students now plan their 4-week revision using effective revision tools? What are the effective revision tools that they can use in science especially? Right. I think the analysis of the paper is being done thoroughly in terms of the discussion. So now they do have a very fair idea or clear-cut idea. Okay, these are the syllabus which they are supposed to
cover for different subjects. Okay. So now the syllabus part is clear. So the second thing is to, make beautiful notes in terms of concise points, which is keeping this time constraint in mind, because only 4 weeks are left. On 26th of April, their board examination would kick off. So make concise points, beautiful notes, so that you can, revise them. You can make flow charts. You can make, level diagram, beautifully level diagram for biology, because the diagram is gonna give you the whole picture or a bigger picture about the that concept. Because if you would, keep on reading thoroughly through NCRT, then I think it is going to take a lot of time. That would be time consuming, and time is not there. So make point, beautiful notes, flow charts, beautifully leveled diagrams. Um, Flashcard could be one of the effective memory tool which can be utilized by these students. And mock test paper, I think, because most of the students must have covered the syllabus so far. Little bit, nitty and gritty might be there. So in the coming week, they can, address those nitty and gritties. So after that, I think mock test paper is one of the handy tool through which they can revise the entire syllabus. So that is gonna be very, very handy, and that would also give them a very fair idea about the, uh, paper pattern, type of questions, and what kind of formatting they're supposed to follow while answering those questions. So I think these are the four points which they just need to keep in mind to, revise the entire syllabus for science in these 4 upcoming weeks. एंड रोशन सर, मैथ्स में कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज है जो बच्चे डिफरेंट कर सकते हैं फॉर दैट क्विक रिवीजन और एनहांसमेंट ऑफ रिकॉलिंग? यस मैम, मैथ्स में मेरा एडवाइस बच्चों को ये रहेगा कि आप एक डेली टारगेट बनाएं। पहले डेली टारगेट बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा भी ना हो कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हैं, आप एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स का प्लान बनाएं। और डेली टारगेट में, क्योंकि मैथ्स में रेशनलाइज सिलेबस हो गया, तो एक चैप्टर हार्डली विल टेक रिवाइज अगर अच्छे से करेंगे तो 2 to 3 आवर्स। आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को पूरे अच्छे से सॉल्व कर लें तो 2 to 3 आवर्स के बीच में, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, सम स्टूडेंट को तो 1 आवर ही इस वक्त रिक्वायर्ड होगा, लेकिन वो अपने और भी टाइम को यूज करेंगे। इसको यूज करने का एक एडवाइस मैं ये दूंगा बच्चों को कि वो पहले एक फॉर्मूला चार्ट बनाए हर चैप्टर्स की। पहले तो पूरा उनको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद चैप्टर वाइज वो फॉर्मूला चार्ट बनाए और उसको अपने स्टडी रूम में पेस्ट भी करते हैं, क्योंकि जब हम बार बार उसको देखेंगे ना तो हमें याद होता रहेगा। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज डेट आप एक कप ऑफ टी ले रहे हैं ब्रेक के लिए, तो भी आपकी नजर उस चार्ट पे अगर पड़ेगी तो आपको याद होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि सबसे पहला सजेशन कि फॉर्मूला चार्ट चैप्टर वाइज बनाएं और अपने स्टडी रूम में उसको पेस्ट कर दें और आफ्टर बोर्ड एग्जाम उसको हटा भी लें। नेक्स्ट इज कि वो प्रैक्टिस करें मॉक पेपर्स को, और डेली का तो नहीं कहूंगा मॉक पेपर प्रैक्टिस करें, पर एक वीक में कम से कम 3 मॉक पेपर वो जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो भी चैप्टर उनके रिवाइज होते हुए चले जाएंगे तो जब उनके क्वेश्चंस वहां पे वो देखेंगे तो उनको एक कॉन्फिडेंस अब बूस्ट होता रहेगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन लेवल सही चल रहा है। तो 4 वीक्स अभी हमारे पास है स्टिल देयर, 1 मंथ में 4 वीक्स तो आई है, तो 4 3 जा 12 मॉक पेपर प्रैक्टिस पेपर विल डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट्स। एंड लास्ट, फ्लैश कार्ड, जैसा कौशिक सर ने भी मेंशन किया था कि फ्लैश कार्ड तो डेफिनेटली हेल्प करते ही है। फ्लैश कार्ड भी जस्ट लाइक मेमोराइजिंग टूल है, आप उसको रिवाइज करिए तो इससे काफी बेनिफिट होगा स्टूडेंट को। तो ये 3 एडवाइस है जो बच्चे स्ट्रेट अवे फॉलो करें। Great, sir. Sir, what can be added to this list of revision tools, especially if we talk about social science? वेल मैम, कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं है, सेम इसकी भी वही स्ट्रैटेजी है कि जो भी, क्योंकि सोशल साइंस सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो इसको जो है कॉन्सेप्चुअली समझने की भी बहुत ज़रूरत है, समझ के ही प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जो समरी है सारे लेसन्स की, उनको केयरफुली मेमोराइज करना है। उसके लिए बच्चे एक फ्लो चार्ट जो है कॉन्सेप्ट्स का बना सकते हैं, उसके थ्रू उन चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं लेस टाइम।
देखिए, खुद के नोट्स जो है वो खुद के पॉइंटर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि जब आपका खुद का लिखा हुआ आप पढ़ते हो और बार बार उसी को रिवाइज करते हो तो ये काफी इजी हो जाता है किसी के लिए भी उसको याद रखना या लंबे समय तक उस चीज को दिमाग में सेट रखना। तो मेरा सजेशंस यही है स्टूडेंट्स को कि आप अपने नोट्स बनाइए, अपने पॉइंटर्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए कॉन्सेप्ट्स को रिमेम्बर रखने के लिए, और बार बार उन्हीं को रिवाइज कीजिए। और कोई भी चीज जस्ट लर्न मत कीजिए, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे की जो कह सकते हैं कि जो चीजें हैं उनको जरूर समझिए, जो उसके बेसिक्स हैं उनको जरूर समझिए। तो फिर उस सबके साथ में चीजों को याद रखना, टॉपिक्स को याद रखना वो काफी इजी हो जाता है, आसान हो जाता है बच्चों के लिए। Correct. And the only thing I would like to add, especially in case of English and language based papers, is that you should always have your flowchart for the entire outline of chapters ready, so that you don't have to go back to NCERT reading on the very last day of revision. So have your literary devices ready, have your figures of speech ready, have them listed down so that it's easier to recall at the time of quick revision. Now that brings us to the third part of our discussion today, which is how to solve sample papers and how to write subjective answers. There are so many of my students who brought up this query that they are confident in preparation, but they are not so confident in paper presentation, right? So I would want my panelists to discuss this point in very great detail, that how can a student gather confidence, especially in subjective writing. So Kaushik sir, could you point out the key things to keep in mind while writing science answers per se? Yeah, I mean, the first thing is that they have to, break the shell in which they have been for the last 2 years due to this COVID situation. Of not writing anything. Of not writing the subjective papers. Even the, term test, each and everything is being done in the objective nature. Yes. So the first thing we'll have to be mentally prepared. Now they'll have to, get back to the same pattern which they used to follow pre-COVID. So first thing is that. Second thing which I would like to add here is to, write a subjective answer for a particular question in a proper format. The first thing is to interpret the question correctly. If you would get to know what the question is actually asking, then only you can think of the correct answer. So that is the first point, the right sort of interpretation. If that is done, then the second thing which you need to keep in your head is the allocation of marks. I mean, at times, these students, only 1 mark is allocated to a particular question, but they do have got a lot of information about that topic. So they just keep on writing. So, allocation of marks should be there in mind. If 1 mark is being allocated or 2 marks is allocated, so they have to write accordingly. The good thing about this sample paper, which I have observed, is even the long answer type questions is being divided into sub questions, and they are having the weightage of like half marks, 1 mark, not more than one. So even that case study based question, though it is of 4 marks, but it is having 4 questions, 4 different questions. So though it is a long answer type or considered as a long answer type, but actually the approach of the student should be that short answer wala type one. So that is something which they need to keep in their mind. And rather than writing the lengthy paragraphs, they should go for the key pointers. वो जो एग्जामिनर है उसकी लाइफ थोड़ा आसान करता है. तो अगर आप थोड़ा कंसाइज फॉर्म में अपने आंसर को पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा है. तीसरा ये है कि आई हैव ऑब्जर्व स्टूडेंट्स की जब कोई क्वेश्चन का सब पार्ट होता है, सब क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले पार्ट का क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में दूसरे पार्ट का क्वेश्चन आंसर भी कर दिया. प्लीज डोंट डू दैट. If the sub questions are there, sub parts are there, so write the answers of those sub parts in different paragraphs. Questions की जो sequencing है, जो numbering है, that should be proper. I would still, normally people do suggest कि you should go ahead with those questions जो आपको आते हैं, जो short answer type है. But I do still believe in that thing कि the sequence of the question needs to be followed. Even if you don't know the answer, please leave a little blank space, but go with question 1. If you know the answer, write the answer.
if you don't know the answer, leave a little blank space, and then you can start with your second question. So numerical based questions are there, even in biology are there, in physics, a lot of numericals are based on the chapter of electricity. Second chapter said there would be no numerical. So which is step-wise marking is there. So please अपने आंसर्स को इस तरीके से फॉर्मेट करिए कि इवन इफ यू आर नॉट रीचिंग टू द फाइनल आंसर, तो बीच में आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स देने में हेल्प करे. और जो So I कौशिक think सर इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे, इन साइंस एग्जाम जनरली डायरेक्ट फार्मूला एंड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द फिजिक्स पोर्शन स्पेशली. तो स्टूडेंट्स जो फार्मूला है या जो थ्योरम्स हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. और एक मेरा सजेशन और भी है, जो मैं अपने स्कूल टाइम में जिसको लेके मैं बड़ा सफर करता था, लाइक फार्मूला तो याद है that V equals to IR, but I forgot what V how to represent, drive what it. I, yes. So कोई भी फार्मूला अगर आप याद कर रहे हो तो उसके साथ जो उसके एब्रिविएशंस हैं उनको जरूर ध्यान रखिए कि एक्चुअली क्या चीज किसको डिनोट कर रही है. और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको फार्मूले याद हैं, थ्योरम्स याद हैं, तो यू कैन इजीली जो है सॉल्व द प्रॉब्लम्स. Even sir, कभी कभी क्या होता है कि they are getting the final answer but they are not writing the correct unit Yes, and they're losing their marks. and So that please, matters a lot, definitely. yeah, that Yes, matters a lot, and that's through SI unit. You'll have to keep in your mind. yes. So please, cool headedly आराम से करिए. 2 hours के का टाइम है आपके पास and 40 questions attempt करने हैं. और questions are not lengthy. You are not supposed to write the lengthy paragraphs. You're not supposed to write even a single word and you're going to get half mark rather than just ticking. So वो tick वाले mentality से, उस attitude से बाहर निकल के आना है. You'll have to pick up your pen and have to pen down the answers properly. So please do right interpretation, keep the allocation of marks in mind, and then go for the answers by writing it in pointers. Stepwise marking should always be in mind. I think these are the points from our side for the subject science. Thank you so much for laying that down, Kaushik sir. And also, Atul sir pointed out very correctly things which students often ignore while preparing their answers. Roshan sir, maths mein usually it has been observed students take for granted the stepwise method of writing answers. What would you like them to say, especially while writing subjective answers? किस बात का ध्यान ज़्यादा देना है? मैम, सबसे पहले तो मैं कौशिक सर को ही थैंक्स कहूंगा. उन्होंने लगभग सब कुछ एक्सप्लेन ही कर दिया था. तो सर ने जैसा बताया मैम ने, मैं इसी को ही कंटिन्यूएशन में ही आगे बोलूंगा कि सबसे पहले देखिए, सब्जेक्टिव आंसर बच्चे ज्यादा अच्छे से कब लिख सकते हैं, पहले वो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की रिपीटेडली प्रैक्टिस कर डालें. एक आंसर लिखने की जब लिखेंगे बार बार, तो वो ऑटोमेटिक हमारे एक हैंड मेमोरी में आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट हो जाता है. तो रिपीटेडली प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को एडवाइस करेंगे कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की सब्जेक्टिव की रिटन प्रैक्टिस करें. भले उनको लगता हो कि नहीं मैं ये बार बार कर चुका हूँ, फिर क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनेशन हम देते हैं तो जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का पूछा गया है, सपोज 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो स्ट्रेट अवे उनको कंसेप्ट या फॉर्मूला लिखना है और नेक्स्ट स्टेप में उनको क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है. लेकिन अगर क्वेश्चन जैसे 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो उनको पूरी जैसे क्वेश्चन की सिचुएशन होगी, वो सारे स्टेप्स उनको जो एडुकेट स्टेप्स हैं रिक्वायर्ड है, वो उनको वहां पर प्रॉपरली मेंशन करना होगा. इसी तरह 4 मार्क्स में भी एज पर रिक्वायरमेंट आपको उतने स्टेप्स लिखने होंगे. और सबसे अच्छी बात है कि सीबीएसई ने प्रॉपर मार्किंग स्कीम बेस्ड ऑन स्टेप वाइज वो भी रिलीज किया है अपने सैंपल पेपर के साथ. तो वहां से बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा भी हो जाएगा. एक बार वो जरूर देखें, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 2 या 3 बार आप उसको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व भी करें. उससे आपको परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि ये स्टेप्स तक अगर हम किसी भी आंसर को लिखेंगे तो यहाँ तक मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे. इसी पर एक और मेरा एडवाइस है कि एक मैनेजमेंट में सिखाया जाता है ब्रिक बाय ब्रिक कंसेप्ट. अब ये ब्रिक बाय ब्रिक कंसेप्ट क्या है, ये बहुत जरूरी है बच्चों को जानना. हम लोग ने मैशंस को देखा है. मैशंस सभी लोग ने देखा है, घर पे आते हैं, काम करते हैं, आपका घर बनाते हैं, बहुत सुंदर घर बनाते हैं. तो मैशंस क्या करते हैं, जब मोटार रखने के बाद जब एक ब्रिक प्लेस करते हैं,
तो ब्रिक प्लेस करने के बाद जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उस इक्विपमेंट से वो प्रॉपरली मेजर करते हैं कि वेदर इट इज गोइंग टू राइट और नॉट, सही सही जा रहा है कि नहीं। लाइन थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो पूरी वॉल बिल्कुल टेढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल गलत सा जाएगा डायरेक्शन। तो वो पूरी तरह से देखते हैं। तो उसी तरह जब हम अपने आंसर लिखें तो लिखने के बाद टेक अ पॉज, क्योंकि 14 क्वेश्चन के लिए 2 आवर का टाइम बहुत सफिशिएंट है। हम अपने आंसर को लिखने के बाद इस ब्रिक बाय ब्रिक कंसेप्ट से देखें कि यस वेदर इट इज एडुकेट और नॉट, पूरी तरह से वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इन द सोल्यूशन इज मेंशन देयर और नॉट, हर चीज को हम देखें वहां पर मौजूद है कि नहीं। अगर सारी चीजें मौजूद है देन मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसा कि अभी कौशिक सर ने एक बात बताया था कि आपको आंसर जो रिपोर्ट करने हैं वो सीरियल ऑर्डर में करेंगे तो एक बहुत एक्सीलेंट इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। आप अगर क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 3 करेंगे तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा 4 मार्क्स से 3 मार्क्स से, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे अच्छा कि अगर आप 1 बाय 1 आप अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 1 और 2 के बीच में प्रॉपर गैप दीजिए, और बल्कि प्रॉपर लाइनिंग से आप सेपरेटर भी यूज करिए कि वो सेपरेट लगे कि हाँ दीज 2 क्वेश्चन। आप उसको एकदम जितना सुंदर बना सकते हैं ना, मैशन की तरह सोचिए, घर वो इतना सुंदर सा बना सकते हैं, तो आप अपने कॉपी में ऐसा लिखिए कि बहुत ब्यूटीफुली वो प्रोजेक्ट हो, तो एग्जामिनर को भी फील अच्छा लगता है कि हाँ इस ब्यूटीफुल ऑर्डर में ब्यूटीफुली बच्चे ने आंसर लिखा है। तो कहीं ना कहीं कभी बच्चे को इसका एडवांटेज भी मिलता है, कुछ स्टेप मिस होने पे भी मार्क्स मिल जाते हैं। एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर रोशन सर। जी सर, जी सर। जैसे कि अभी कौशिक सर ने भी बोला और आपने भी कहा कि सीक्वेंसिंग जरूर फॉलो करें, मगर स्टूडेंट्स एक चीज मैं बोलूंगा कि स्टिक मत हो जाइएगा, है ना। हाँ, मतलब आपका वहां पर जो एग्जाम हॉल में टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन केस थर्ड नंबर क्वेश्चन आपने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया और थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देन इन दैट केस डोंट वेस्ट योर टाइम। आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। एक बार उसको टाइम दो, सोचो, अगर लगता है कि नहीं आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा तो आप उसको फिर लास्ट में भी कर सकते हो। आप अपना टाइम वहां पर जो है बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। बट हाँ, डेफिनेटली एक सिक्वेंसिंग रहेगी तो बेटर है। लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको यही इसी को ही एग्जैक्टली फॉलो करना है। हाँ, ये बिल्कुल जरूर है कि ये जैसा सर ने बोला, रोशन सर ने, कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पहले फर्स्ट किया फिर 12 किया फिर सेकंड किया फिर फोर्थ किया, मतलब ऐसा रैंडम सा। तो अगर आप एक सीक्वेंस में सॉल्व करते जाइए, जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप पिक करते जाइए, और जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आपके मतलब जिनके आंसर्स आपको कम आते हैं या वीक है, उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सर कभी कभी तो स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि एक क्वेश्चन के लेट्स से 3 सब पार्ट्स हैं, तो 2 सब पार्ट उनको आता है, उन्होंने लिख दिया, एंड देन थर्ड सब पार्ट दे आर राइटिंग आफ्टर द लास्ट क्वेश्चन, then the teacher इसको will अवॉइड get करना confused चाहिए, and exam. डेफिनेट। So हाँ, it is not mandatory, to follow the sequence. But yes, this sequence following is definitely gonna make the life of that examiner little easy. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर आप उसकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाओगे तो I think and I do believe कि वो भी आपकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाएगा by giving you good marks. राइट। एग्जैक्टली सर, I was एग्जैक्टली just सर। about to say this. Students like Akshaya, students like Anshu, they're all Akashans, okay? So they all have this major fear of how to impress the examiner. तो उनके दिमाग में ना अभी 30 days preparation में भी यही चल रहा है, how to present my answer sheet in such a manner that my examiner is impressed and is willing to give me marks. So I think what all of you have learned right now, based on the valuable input that our panelists have shared, is that understand the blueprint which has been shared, especially in case of marking scheme. Avoid writing lengthy answers, especially when you talk about science, and even in case of social science questions where it's only, let's say, a short answer question, right? So thoda sa bas differentiation factor kya hai, that when you talk about language subjects such as English or Hindi, your answers always have to be in paragraphs. So this is the only subject where preparation has to be done in non-point format. There cannot be any points. You have to stick to paragraphs. Make sure you create 2 to 3 paragraphs in long answers, create a single para for short answer, and do not ignore accuracy of writing. Marks दोनों चीज के हैं, जितने value points के हैं उतने accuracy of writing के भी marks है. So lengthy summaries की जरूरत नहीं है. No need to memorize or write lengthy summaries of the chapter.
understand the main idea of the question, write it in the very first line, and then jump to the remaining value points. So all those questions where students have asked how to present your answers, I hope that is clarified. Now that brings us to the culmination of our today's discussion, where I would like you to understand one important thing, कि इतनी discussion जो आपने mock paper solving के बारे में करी है, how are you going to assess that, right? So one thing which you can take away from today's discussion is that we have for you one important giveaway, and that is a mock paper for science and maths for both CBSE and ICSE students who are listening to us right now. There will be a link that will be shared with you in the description box. When you click on that link, you will receive free CBSE or ICSE, whichever board you select. You will receive a link for those mock papers, including one for science, one for maths. And please make sure you click on that link, fill out the details for the same, and you will be receiving those mock papers via mail. So I hope all those listeners who want to really check कि उनका इस 30 days preparation का क्या input रहेगा, what exactly is the learning that they have got in these 4 weeks, make sure you get those sample papers, practice them in a time bound manner, proper simulation के साथ, जैसा हमने पिछले webinar में discuss भी किया था, and I'm sure you will be able to benefit the most out of all the valuable inputs that have been shared by our panelists today. So before we conclude today's discussion, sir, Kaushik sir, what do you want to give as the concluding remarks, keeping in mind that during examination, while writing subjective answers, what are the key things all our students should keep in mind? And with that, I would be able to give them a concluding sign for the science subject especially. What do you have to say, Kaushik sir? Okay. The first thing is handwriting. True. Please write your answers properly in a very neat and clean manner. Cutting should not be there. If you can avoid the cutting and the overwriting, that is something which you can take care of. And you can also highlight, the important lines or the key terms, the technical terms. To have a wonderful format to get maximum marks. So proper, sequencing we have already shared. Most of the points we have already covered, but these are the 3 things I would like to add. Handwriting should be beautiful as possible, and no cutting, no overwriting. Please avoid that as much as possible, and highlighting, and also write the proper headings wherever required. Highlighting is one thing, and having the or writing the headings and then elaborating them either in terms of points or maybe in a small paragraphs. So that is something you can do to excel in your board examination. Roshan sir, what do you have to say for our listeners as a final message? Ma'am, as a final message, तो अगेन मैंने जितनी भी बातें बच्चों आप लोगों को बताई है वही थोड़ी सी मैं रिपीट करूंगा, साथ में 2-3 चीजें और ऐड करूंगा। सबसे पहले कि आप रेशनलाइज सिलेबस को आप बिल्कुल अच्छे से जान चुके हैं, आपको पहले से भी पता है, सिर्फ उसी पर स्ट्रेट चलना है, नो लेफ्ट नो राइट, सीधा स्ट्रेट उसी पे चलना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। सेकंड, आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही केवल सॉल्व करनी है, नथिंग एल्स, कोई भी और साइड बुक्स नहीं आपको पिक करना है, सिर्फ इन्हीं पे स्टिक रहिए और प्रैक्टिस करिए सैंपल पेपर्स को। आपको 1 वीक में 2 to 3 सैंपल पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है। ये आप 4 वीक्स के लिए बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आपको हर वीक सैंपल पेपर करना है। और मॉक पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आप ये जरूर देखिएगा कि पहले आपके सारे सब्जेक्ट प्रॉपरली रिवाइज्ड हो चुके हैं। अब जैसे सपोज डेट आपने एक पहले मॉक पेपर अटेम्प्ट किया, तो कोशिश ये करिए कि आप घर में जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोई भी घर में सिबलिंग्स हो या पेरेंट्स हो, आप उनसे एक रिक्वेस्ट करिए कि फॉर द 2 आवर्स आप मुझे इन्विजिएट करिए। एज अ एग्जाम टाइम इन्वायरमेंट में आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल नो मूवमेंट के साथ विद इन 2 आवर्स आप उस पेपर को फिनिश करिए। बिल्कुल जैसे कौशिक सर ने भी बताया कि कोई अवॉइड कटिंग, ठीक है, एक आंसर कंप्लीट हो, बिल्कुल उसको सेपरेटर्स यूज करिए जिससे आपकी कॉपी बिल्कुल लगे। मतलब ये हैबिट में आनी चाहिए आपको, और कोशिश करिए कि उसी टाइम में पेपर अटेम्प्ट करें जिस टाइम में आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ताकि आप उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो जाएं।
ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रैक्टिस पेपर जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो उसी टाइमिंग में अटेम्प्ट करना चाहिए जिस टाइमिंग में आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। बल्कि बिफोर अटेम्प्टिंग पेपर 15 मिनट आइडियल सेट होने की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां पे 15 मिनट पहले पहुंचना भी होगा। कहीं कहीं हाफ एन आवर्स भी इंस्ट्रक्शन आते हैं, आपको आइडियल सेट होकर के कैसे कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है ये भी चीजें सीखनी होगी। इसके अलावा जैसे मैंने सैंपल पेपर बताया 2 to 4 सैंपल पेपर्स आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस करने के बाद सेल्फ इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि हमारी एरर एनालिसिस। आप क्या करिए, जो भी आपने पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं उसको सेल्फ एनालाइज करें या रिक्वेस्ट करें अपने फैकल्टी से, टीचर से कि प्लीज इवेल्युएट इट, और एकदम ऑनेस्ट इवेल्युएशन। अगर सेल्फ इवेल्युएशन करने तो ऑनेस्ट करिएगा। आप खुद देखिए कि व्हाट द पॉइंटर आई हैव मिस्ड इन दिस while writing the answer of this particular question, क्या पॉइंटर्स, क्या इंफॉर्मेशन आई हैव मिस्ड। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपसे अनअटेम्प्टेड हो, तो रीजन फाइंड करिए कि व्हाई दिस क्वेश्चन वाज अनअटेम्प्टेड। मैंने तो सब प्रैक्टिस कर लिया था। तो स्टिल आपको वो एक्सेप्ट करना होगा, दैट इज योर वीकनेस। अब आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है आप उस वीकनेस को रेक्टिफाई करिए और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर में देखिए वेदर इट इज इम्प्रूविंग और नॉट, क्या हमें वो इम्प्रूवमेंट जो रिक्वायर्ड था वो मिला कि नहीं। तो ये आप अगर एक हफ्ते में 3 प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो फॉर द 4 वीक्स 12 प्रैक्टिस पेपर तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे। अगर फर्स्ट टाइम 2 आवर्स लगता है तो नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा 1 आवर 50 मिनट्स, देन इट रिड्यूसेस और लास्ट में ये कंसिस्टेंसी आएगी कि 1 आवर 30 मिनट्स में आपका पेपर पूरी तरीके से सॉल्व, अच्छे तरीके से सजा धजा हुआ पूरा खत्म हो जाएगा पेपर। तो Thank you यही so much for एडवाइस है। laying that down also, Atul sir, because I know a lot of students were Yes. considering the same कि miss ना हो जाए. Roshan sir, thank you once again. Atul sir, concluding remarks from your side, please. Definitely, ma'am. Actually, scoring good marks in board exam not only require you to be good at your studies, but also be efficient at writing good answer in the paper. So, students, if you want to note down these points, you can note down all these points. First one is read all the questions and instructions carefully in the time of 15 minutes before your exam, right? And second, decide on the order in which you wish to answer the questions. Ideally, you should start with the very short answer type questions, followed by short and then long answer type questions. Actually, writing the long answer first may take lot of time, due to which you would not get enough time for the remaining questions. तो ऑर्डर जैसा सर लोगों ने बोला कि आपको एक सीक्वेंस और ऑर्डर फॉलो करना है. फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप, देन very short answer type, then short answer type, and then long answer type. Make sure that you answer all the questions according to the prescribed word limit. Overlong answer are not going to fetch you outstanding marks, but to the point and brilliant answer will definitely do. So be on the point, make your pointers, use them in your examinations, use the flow charts in your examinations to answer in point-wise options. Now, do not spend time on those questions which are not clear to you. It's better to attempt such questions in last, right? And another important thing which I want to share with you, that do not leave any question unattempted. So try to answer the unknown questions by including related events or facts. For example, आपको कोई क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं. तो आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं है, मगर उसमें कोई चीजें हैं, कोई पॉइंट्स हैं, कोई वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप कुछ जानते हो, तो उसके रिलेवेंट आप कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ डिटेल्स दे सकते हो, बजाय उसको खाली छोड़ के आने के. तो छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, आपको अनअटेम्प्टेड नहीं रखना है. और ऐसे क्वेश्चंस को आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, इनको स्टार्टिंग में बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका एक इम्प्रेशन बहुत खराब होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में attempt कीजिए. Yes, long answer type questions should be written in bullet or pointers. Highlights the headings, subheadings, and important keywords in your answer. Keep your map work clear and tie it carefully with your answer sheet. And last point, आप
10 to 15 मिनट जो है वो अपने रिवीजन के लिए जरूर रखिए, ताकि अगर कोई एरर आपको दिखती है तो आप उसको ठीक कर सकें, उन फैक्ट्स को करेक्ट कर सकें। Thank you so much for all those tips and pointers, sir. I hope all our listeners have really understood what has to be done in these upcoming 4 weeks. So I would like to thank all of you guys for attending today's session. Let's thank all our eminent speakers also for their great inputs, and all the students for sharing these great questions. I hope you found it informative and useful. Now, if you want to sign up for the next webinar, which we are going to conduct on the common mistakes to avoid in class 10th board exams, you can find the link for the registration of the same. It will be there in the description box, or you can visit the website and register for the webinar for the same. So have a great evening, everyone. Thank you so much for being part of this. Thank you. Thank you. And all the best to all the students. All the best, students. Thank you. All the best. Thank you so much.